Assalamu alaikum students. Today we are going to start 970932 May June 2024. The time is 10 o'clock. Starting time. What will be the ending time? We'll see after solving the paper. Now, question number one. What we have in question number one, we have to sketch the graph of y is equals to modulus function. So for modulus function, we know that we have to make a v for modulus graph. We have to make a v for modulus graph. And the vertex of V will be calculated by equate the thing which is in the modulus. So x minus 2a is equals to 0. So the value of x is 2a. यहाँ पर लिखा हुआ है where a is positive. So it means positive side पर हमें रहना है. Here it is 2a. Let's say just make a v. And this is the graph of 1 mark of modulus function. Now, what we have in the second part, we have to solve the inequality. How to solve the inequality? Always just square on both the sides. This is the simplest method to solve any inequality. So 2x plus 3 minus 3a whole square less than x minus 2a whole square. Expand the bracket. A square a square minus 2ab plus b square less than a square minus 2ab plus b square. Arrange it. So it will be 3x square minus 8ax plus 5a square less than 0. Factorize it by middle term breaking. Minus 5ax or any method of factorization you can use here. 5a square less than 0. X common. So it will be 3x minus 5a. And minus a common. So it will be 3x minus 5a. Less than 0. 3x minus 5a common. So it will be x minus a less than 0. Now the critical values are, first x is 5a over 3 and the second x is a. So now we have to write in the form of inequality. So therefore, in the form of inequality, it will be x, the smaller value here and the larger value here. This is a question of 2 mark. Hopefully it is clear. There's no confusion in the question. Now, question number 2, express in partial fraction. So whenever we have any equation in the denominator, so first of all, we have to factorize the equation. So 2x square minus 5x minus 12. This is denominator. I am factorizing it 2x square minus 8x plus 3x minus 12. So it will be, you can get the factors directly also, right? X minus 4 plus 3 times x minus 4. So the factors are x minus 4 and 2x plus 3. So therefore it will be 6x square minus 9x minus 16 over x minus 4 2x plus 3. अब देखिए जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना, वो क्या करते हैं मोस्टली, जस्ट वो लिखेंगे x minus 4 plus 2x plus 3. Here लीनियर फैक्टर ऊपर a, लीनियर फैक्टर ऊपर b, और यहां पर ही मिस्टेक हो गई. एंड व्हाट इज दैट मिस्टेक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिग्रीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की सेम नजर आ रही हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली वर्किंग स्टार्ट करना है. सो 2 minus 2 degree of numerator minus degree of denominator, 2 minus 2 it is 0, a constant. So एक कांस्टेंट यहां पर आएगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा. एक कांस्टेंट आएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट होगा. यहां पर अमूमन मिस्टेक होती है कि चेक नहीं किया जाता कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ना
After that, 6x squared minus 9x minus 16 is equals to cross multiply a times x minus 4, 2x plus 3 plus b times 2x plus 3 plus c times x minus 4. Now, first of all, let x minus 4 equals to 0. So x is equal to 4. When we substitute x in the left-hand side, the result is 60. The result is, it will be 44. The result is 44 equals to x minus 4 is 0. So the first is 0, third is 0. We'll get the value of b. When we substitute 4 at the place of x, it will be 11. So the value of b is 4. After that, let 2x plus 3 equals to 0. So the value of x is minus 3 over 2. Substitute in the left-hand side. And for the right-hand side, when 2x plus 3 is 0, so the first is 0 and the second is 0, we'll get the value of c. And directly I'm writing the value of c is minus 2. And after that, for finding out the value of a, compare the coefficient. A into x, ax, into x, x squared, means 2a x squared is equal to, the coefficient of x squared towards left is 6. So the value of a is 3. This is the partial fraction. Just find out the values of unknown. Now, what is next? Question number 3. The variable x and y satisfy the equation this. Show that the graph of y against x is a straight line. It's a question of linear law. We have to make y is equals to mx plus c. क्या मतलब एक टर्म कांस्टेंट हो, एक टर्म में x हो, एक टर्म में y. So now I am making this, taking ln or lg on both the side, a power 2y minus 1 equals to ln b power x minus y. According to the property of log, 2y minus 1 dropped, ln a is equals to x minus y dropped, ln b. हमारा टारगेट क्या है? एक कांस्टेंट टर्म यहां पर निकालना. सो ना, अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं. 2y ln a माइनस ln a. देखें कांस्टेंट टर्म ln a की बन रही है. हियर इट इज x ln b माइनस y ln b. So after that, 2y ln a plus y ln b is equals to x ln b plus ln a. So according to this, अगर y को कॉमन लिया जाए तो it will be x ln b divided by 2 ln a plus ln b plus ln a divided by 2 ln a plus ln b. Look, एक कांस्टेंट टर्म बनी, एक टर्म x के साथ, एक टर्म y के साथ. तो this is according to linear law. We convert the given equation in a straight line equation. Now, after that, given that a is equal to b cube, state the equation of a straight line in the form of y is equals to px plus q. Okay, a की जगह b cube रखें और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन निकालें. तो आइए जनाब, हमारे पास प्रीवियसली क्या था? y is equals to x ln b divided by 2 ln a की जगह पर अब मैं क्या लिख रहा हूं? b cube. a की जगह पर क्या लिख रहा हूं मैं? b cube. So x ln b 2 ln b cube plus ln b plus ln b cube over 2 ln b cube plus ln b. जहां जहां a था वहां पर b cube रख दिया गया. अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं, जरा चेक करते हैं कैसे वर्किंग होगी. नाउ y is equals to x ln b डिवाइडेड बाय, पावर नीचे आएगी तो 3 to the 6 ln b
plus ln b. Here it is 3 ln b divided by 6 ln b plus ln b. Now, y is equals to x ln b divided by, ये कितना हो गया 7 ln b plus 3 ln b divided by 7 ln b. ln b cancel out. So y is equals to 1 over 7 x plus 3 over 7. This is the straight line equation. हमें इसी फॉर्म में लिखना है y is equals to, yes. Hopefully it is also clear a question of log. Now, what is next? Question number 4. Differentiation question आपको दिया गया. Now, क्या है जनाब इसमें? Find the gradient of the curve at the point where y is 1. Okay. So here, y e power 2x plus y square e power x is equals to 6. Differentiate कर रहे हैं. First पर u into v का formula apply होगा. u, the derivative of v, 2 e power 2x. अब ये बेसिक डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए. प्लस v u डैश, y के लिए क्या हो जाएगा? y डैश आ जाएगा. फर्स्ट, सेकंड, u the derivative of v plus v the derivative of u, it will be 2y y dash equals to 0. Find the gradient of the curve at the point where y is 1. Where y is 1. Now, if y is 1, what is the value of x? जरा चेक करते हैं. y1 क्वेश्चन में रखेंगे. So it will be e power 2x plus e power x equal to 6 means minus 6 equals to 0. So it's a quadratic equation in terms of e. Just by the help of calculator, get the two values of e power x. The first value is 2 and the second value is minus 3. Reject this because negative log is not possible. And from this, x is equals to ln 2. Now, we have to calculate the gradient when x is ln 2 and y is 1. So first of all, I'm arranging the equation, or just I'm replacing the values. E is e power x की जगह पर मैं क्या रखूंगा? 2 और y की जगह पर मैं क्या रखूंगा? 1. So now y is 1. So here it is 2 into 2 plus 2 square is 4 y dash plus 2y square y तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस e power x की जगह 2. So 2 2s are 4 y dash equals to 0. 4y dash 8y dash equals to 2 2s are 4 and 4 plus 2 8. 2 2s are 4, 4 plus 2 8, right? Here it is. अच्छा, एक चीज देखिएगा, इन दिस जब हमने e power x को 2 रखा तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा. तो here it will be 4 2s are 8, 8 plus 2 10. उधर जाकर minus 10. So the value of y dash is minus 10 over 8, and which is equals to minus 5 over 4. This is the final answer of the question. Hopefully it is clear, a simple question of 6 marks. Now, next question. Iteration का question आपको दिया गया. It is given that equation this has only one root between 0.7 and 0.8. Show by calculation. Okay, so first of all, make a function fx is equals to e power 2x minus 5 minus cos 3x. Replace the values. When f 0.7 calculated in radians, the answer will be minus 0.4, which is less than 0. And when x is 0.8, the answer is 0.6, which is greater than 0. And this we have to prove that the root lies between the given values. Now, after that, show if a sequence of values in the interval. ये सारी stories means कि इस formula से आपने question अपना बनाना है. आइए जनाब, इस formula से हम question form करते हैं.
how to form question by the help of this formula. So I'm writing it like x is equal to 1 over 2 ln 5 plus cos 3x. 2 cross multiply 2x is equals to ln 5 plus cos 3x, taking e on both the sides. So e power 2x is equals to 5 plus cos 3x, and this we have to prove. Question हमारा form हो गया by the help of the formula. Now, by the help of this iterative formula, calculate the root up to 3 decimal places, give each result up to 5 decimal places. So there's no initial value given. So I'm taking initial value as 0.7. So the second value x1 will be, so the second value will be x1, and x1 will be half ln 5 cos 3, 5 plus cos 3, x की जगह पर क्या रखा 0.7. So the answer is 0.75149. And after that, how to calculate x2? Half ln 5 plus cos 3, 0.7 की जगह रखेंगे आप आंसर, इक्वल टू दबाएंगे, यू विल गेट द रिजल्ट 0.73719. और अब तो आपने सिर्फ इक्वल टू प्रेस करना है. सो x3 इज 0.74105, x4 is 0.73999, x5 is 0.74028, x6 is 0.74020. Therefore, up to 3 decimal places, the answer of x is 0.740. This is the final answer of 3 marks. Hopefully, it is clear the question of iteration. Next question, again differentiation integration का ही लग रहा है ये जनाब. Question number 6, what we have in this question: find the exact coordinate of m, और exact coordinate of m है क्या जनाब? Maximum value. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? Gradient is equals to 0. So again, u, the derivative of v, e power minus ax का derivative, I'm just writing here. U is x, so u dash is 1. V is a power minus e power. E power minus ax, so the derivative will be minus a e power minus ax. Now, according to the formula, u, the derivative of v, minus a e power minus ax, plus v e power minus ax, the derivative of u is 1 equal to 0. Now, take e power minus ax common, so it will be minus ax plus 1 is equal to 0. E power minus ax equal to 0, और यहाँ से x is equal to 1 over a. This we have to reject because negative का sorry 0 और negative का log possible है नहीं. यहाँ से x की value a आ गई. Question में रखेंगे for to calculate the value of y. x की जगह 1 over a, e power minus a 1 over a cancel out. So the y is equal to 1 over ae. These are the coordinates of m in terms of a. 4-marked question of differentiation. Next, we have to integrate this and calculate the value. So integration, we have to use by parts formula. According to late rule, there is no log in the question, but we have algebra. So algebra x is u. So u, the integral of v, minus differentiation of u, integral of v, dx, dx. So here it will be x. And what is e power minus ax integral? It will be e power minus ax over
माइनस ए। बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस याद होनी चाहिए बच्चों। सो नाउ derivative of x is 1 and this one will be e power minus ax over minus a dx। अरेंज करते हैं। माइनस एक्स ओवर a e power ax minus 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 plus 1 over a। Again we have to integrate e power minus ax with respect to x, so it will be minus x over a e power ax plus 1 over a e power, this derivative is e power minus ax over minus a. So finally it will be minus x over a e power ax minus 1 over a square e power ax. This is the final integral, and after that we have to apply limits, and the limits are from 0 to 2 over a. Now upper limit minus 2 over a over a e power 2 over a means स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर ई पावर 2 ओवर ए, फिर ई स्क्वायर रह गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, so first is 0 minus second one is 1 over a square, second one is 1 over a square, so it will be minus 2 over a square e square minus 1 over a square e square plus 1 over a square. So the final answer will be 1 over a square minus 3 over a square e square. This is the final answer. The question of integration, hopefully it is clear. There's no confusion in the question. Not very technical question. Question number 7 about trigonometry. Show that this is equal to this. So working on the left hand side, I'm writing it like cos squared theta whole square minus sin squared theta whole square. So it will be a minus b or a plus b. The second bracket is equals to 1 and the first bracket is remaining. Why the second bracket 1? Because of the identity, and cos square theta minus sin square theta is cos 2 theta, a simple identity of the first part. Now, what we have in the second part, we have to integrate it with the limits minus pi by 8 to pi by 8. So now, अब आप देखिए बाय द हेल्प ऑफ द फर्स्ट पार्ट cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं cos 2 थीटा से, और हमारे पास एक और आइडेंटिटी भी है sin 2 थीटा की। sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर यही लिखा हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं sin 2 थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। नाउ cos 2 थीटा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा ओवर 2 माइनस, अभी इसको हमने इंटीग्रेट किया नहीं, sin स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा, क्योंकि ये तो cos की पावर 1 थी, इंटीग्रेट कर दिया इजीली। यहां पर sin की पावर क्या है? 2 है, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कुछ वर्किंग करना होगी। sin 2 थीटा ओवर 2 माइनस इंटीग्रल, हमारे पास एक फॉर्मूला है जनाब, और फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यही cos 2 थीटा वाली आइडेंटिटी यहां पर चल रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और sin स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल हो गया? 1 माइनस cos 4 थीटा अपॉन 2। अब आइए, अब करेंगे हम इसको इंटीग्रेट। सो 1 अपॉन 2
साइन 2 थीटा माइनस, अभी इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं 1/2 को बाहर लेकर आ गया, 1 माइनस कॉस 4 थीटा. नाउ हियर इट विल बी 1/2 साइन 2 थीटा माइनस 1/2. 1 का इंटीग्रल क्या हुआ? थीटा. और कॉस 4 थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया? साइन 4 थीटा अपॉन 4. नाउ मजीद आगे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1/2 साइन 2 थीटा माइनस 1/2 थीटा प्लस 1/8 साइन 4 थीटा. अब इस पर लिमिट अप्लाई होंगी -π/8 से लेकर π/8 तक. नाउ वी हैव टू अप्लाई द लिमिट फ्रॉम -π/8 टू π/8. आइए जनाब लिमिट से अप्लाई करते हैं. अपर लिमिट π/8, सो इट विल बी 1/2 साइन 2. कैलकुलेटर में रखेंगे π/8 तो साइन π/4, और साइन π/4 किसके इक्वल होता है? √2/2 माइनस हाफ π/8 तो कितना हो गया? 1/π/16. π/16. और अच्छा, एक चीज यहां पर देखिएगा, दरमियान में प्लस है, हमने यहां पर माइनस लगा दिया है, तो इट इज प्लस. इट इज प्लस. हियर इट इज पॉजिटिव. हियर इट इज पॉजिटिव. देयरफॉर this will be negative. Which one? This will be negative. Now, अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. Here it is π/16 and माइनस π/8 रख रहे हैं जब, तो 1/8 रह गया, बिकॉज जब π/8 रखा जाएगा तो 4 2 8 और साइन 90 डिग्रीज होता है 1. दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट नेगेटिव π/8 रखा जा रहा है, तो इट विल बी -1/2 -1/2 -1/2 √2/2 माइनस π/16 प्लस 1/8. आइए जनाब वर्किंग करते हैं, इसके ऊपर अरेंज करते हैं. इट विल बी √2/2 प्लस π/16 -1/8 प्लस √2/4 प्लस π/16 -1/8. So now the final answer will be √2/2 plus π/8 -1/4. This will be the final result of the question. Question number 7. Hopefully it is clear. Part B, a bit lengthy question, लेकिन अगर इसको properly step wise आराम आराम से करेंगे तो you can do it easily. Complications नहीं है. जैसा कि लास्ट हमने 25 का एक क्वेश्चन किया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. It is not complicated. Now, question number 8 about the vectors. Point ABC have position vector this. Find the vector equation of a line L1. The line L1 passes through B and C. So first calculate the direction vector of BC, which is equals to OC minus OB. Final minus initial. So OC minus OB. What is OC? 8, 5, -3 minus OB. And what is OB? It is 5, 2, 0. So it will be 8 minus 5, 3, 5 minus 2, 3, and this is -3. But this is not the direction vector. Direction vector is after taking common. 1, 1, -1. This is the direction vector. Therefore, equation of line L1 is OB, any point. So I'm taking OB. It will be 5, 2, 0 plus lambda times direction. 1, 1, -1. So this is the equation of the line BC. After that, what we have in the second part? The line L2 has equation this. Find the coordinate of
Now, the line L2 has equation this. Find the coordinate of the point of intersection of L1 and L2. Calculate करते हैं जनाब. The line L1 and L2. L2 मैं पहले लिख रहा हूं जनाब. What is the L2? Column form में. -214 -214 plus mu times 3 1 minus 2 is equals to line L1 हमने ऊपर लिखी हुई है. This one will be 520 plus lambda times 1 1 minus 1. So now equate x with x. -2 plus 3 mu is equals to 5 plus lambda. Therefore, lambda is equals to 3 mu minus 7. Y with y, 1 plus mu is equals to 2 plus lambda. So lambda is equals to mu minus 1. And z with z, 4 minus 2 mu is equals to minus lambda. So lambda is equals to 2 mu minus 4. Solve them simultaneously and get the value of lambda and mu. So the mu is 3 and lambda is 2. Replace in the third equation the value of mu and lambda. So 2 here, it is equals to 3, mu is 3 minus 7. So 2 is equals to 3, 3 is 9 minus 7, 2. Yes, intersection is possible. And now we need to calculate the intersecting coordinate. Therefore, किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए लैम्डा म्यू की वैल्यू और इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. मैं L1 में रख रहा हूं लैम्डा को 520 1 1 minus 1. So the coordinate is 7 4 minus 2. ये आपके पास इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट डेवलप हो गया. राइट नाउ पार्ट सी. The point D on line L2, the point D on L2 is such that AB is equals to BD, is such that AB is equals to BD. Find the position vector of D. तो अब आप देखिए जरा, AB वेक्टर हमारे पास मौजूद है. AB वेक्टर कितना है? 7 1 minus 4 is equals to OD minus OB. OD minus OB. हमारे पास OD वेक्टर नहीं है, लेकिन ये लाइन L2 पर मौजूद है. और लाइन L2 की इक्वेशन ये नजर आ रही है हमें. लाइन L2 की इक्वेशन ये नजर आ रही है. नाउ तो इन जनरल ओडी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इन जनरल ओडी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2 plus 3 mu, 1 plus mu, 4 minus 2 mu. इन जनरल ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा ओडी का माइनस ओबी. ओबी हमारे पास मौजूद है विच इज 5 2 0. आइए, हियर इट इज 7 1 minus 4 इज इक्वल्स टू, जब इसको सिंप्लीफाई किया गया तो इट विल बी -2 -5 -7 प्लस 3 म्यू और -1 प्लस म्यू और 4 -2 म्यू. अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मींस द बोथ लेंथ्स आर सेम. वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 49 plus 1 plus 16 is equals to the magnitude of the right hand side. -7 plus 3 mu whole square, -7 plus mu whole square, 4 minus 2 mu whole square. Root and root cancel out. And the left hand side is 66 is equals to, expand the brackets, a square
minus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square, a square minus 2ab plus b square. So therefore, by simplification, it will be 14 mu squared minus 60 mu is equals to 0. And according to this, the value of mu is 60 over 14, which is equals to 30 over 7. जनाब, हमें डी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना थे, तो म्यू को हम रख देंगे इस कॉलम वेक्टर, तो हमारे पास ओडी आ जाएगा. So according to this, OD will be 76 over 7, 37 over 7, 32 over 7. These are the coordinates. कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दीजिए. डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 76 over 7, 37 over 7, 32 over 7. These are the coordinates. Hopefully, the question of vector is also clear.